जो भी हम कर रहे हैं उसका आगे के सालों तक, डेकेड्स तक इसका इम्पैक्ट होने वाला है, हम बड़े लीडर हो या छोटे लीडर हो। व्हाट इज फेमिनिन लीडरशिप? इट इज़ नॉट सिंपली अबाउट थिंकिंग लाइक अ वुमन, इट इज़ आई थिंक थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन। आपको अगर समझना है कि आपका घर कितना फेमिनिस्ट है या कितना इक्वल है, आप सिर्फ अपने डाइनिंग टेबल पे क्या हो रहा है वो देखो। यू यूज योर एंगर to channelize things, to make things beautiful. That everyone here is human and everyone here knows something more than me and I know something more than them. Hello, salam and namaste. Most people navigate systems. Some people try and improve the systems. Yet there are a few who try to change the system from within. मतलब एक रास्ता है, उस पे जा रहे हैं, कुछ लोग उस पे ही जाते हैं, कुछ लोग उसको चेंज करने की, उस पे सवाल पूछने की और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी गेस्ट हैं नगमा मुल्ला, जो कि एग्जैक्टली जो मैं बताई हूँ वही कर रही हैं कि सिस्टम्स कैसे चेंज किए जाते हैं उनके पोजीशन ऑफ पावर पे से। नगमा मुल्ला ने 15 साल एडलगिव को दिए हैं। एडलगिव एक फाउंडेशन है जो NGOs को ग्रास रूट लेवल जो काम चलता है उनके लिए ज़राए पैदा करते हैं, सरमाया क्रिएट करते हैं ताकि NGOs उस पर काम कर सकें। और नगमा का काम काफ़ी मशहूर हो रहा है और काफ़ी साल से इन्होंने डाले हैं वहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि नगमा बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी दोस्त है, और जिनसे मैं खुल के बेबाक होके बातें करती हूँ और उनके जो ओपिनियंस हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत ही खुल के, बहुत ही खूबसूरती से सामने आते हैं। स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, और ये नहीं कि सुपरफिशियल लेवल पे काम नहीं करती हैं। शी इज़ नोन एज अ डीपली कंपैशनेट लीडर। शी गेट्स इन द एलिमेंट्स ऑफ फेमिनिन लीडरशिप इनटू इट, ऑफ डीप थिंकिंग, डीप लर्निंग एंड डीप वर्किंग। थैंक यू सो मच नगमा फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। वेलकम। We've been trying to get women like you into this fold of the series that we are doing on Women We Are, and our entire focus has been on that, and we are really fortunate that you are here today and we could do this interview. Thank you. आप थोड़ा सा आपकी लाइफ में जाते हैं। You describe yourself as a chartered accountant by accident and a philanthropic leader by intention. Yeah. ये मतलब ये कहाँ से आया नगमा? ये जब मैं उस दौर की हूँ, आप उस दौर के हैं जहाँ पर हम वो करते थे जो माँ बाप कहते थे, और हमारे यहाँ ऑप्शंस जो होते थे वो 3 होते थे। या तो आप डॉक्टर बनोगे, या तो आप इंजीनियर बनोगे, और उसके बाद में आप थोड़े से कम स्मार्ट हो तो आप कॉमर्स में चले जाओगे, और बिल्कुल दिमाग नहीं है तो आप आर्ट्स में जाओगे। ऐसा व्यू रहता था। तो मेरे ग्रेड्स अच्छे आते थे तो मुझ पे काफ़ी प्रेशर था कि डॉक्टर बनना है, बट मुझे डॉक्टर तो बनना नहीं था। तो आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि उसमें सबसे कम वक्त लगता था, और सो बाय 22 आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो वैसे देखा जाए तो काफ़ी इंटेंशनल है कि मैंने चूज़ किया ये कोर्स करना, बट एक बार काम करना जब शुरू किया तो मुझे उसमें कोई जॉय, कोई ऐसे किसी चीज़ को करने का एहसास, खुशी ऐसे मुझे फील नहीं होता था। एंड आई रियलाइज दैट आई एम इन अ वेरी रॉन्ग प्लेस, कि मे बी इसको सीखना मेरे लिए आसान था, लेकिन ये रोज़ करना मेरे बस की बात नहीं है। आई हैड पॉज्ड, आई हैड स्टेप्ड आउट फ्रॉम इट। सो आई बिलीव कि मेरा एक्यूमन या मेरा पर्सनैलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए नहीं था, तो मैं एक्सीडेंटली उसमें चली गई बिकॉज आई डिडंट चूज एनीथिंग एल्स। बट फिलैंथ्रोपी ऑन द अदर हैंड हैपेंड टू मी। ये एक बहुत ही खूबसूरत एक्सीडेंट है कि आई एंडेड अप इन एडलगिव फाउंडेशन, जो प्री CSR दौर में था, जो उस ज़माने में इट वाज सेइंग दैट वी विल ब्रिज गैप ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट। और उसके पहले मैंने डेवलपमेंट सेक्टर का नाम भी नहीं सुना था। तो मेरे लिए अचानक से एक नई दुनिया खुल गई जहाँ पर ग्रीफ, पॉसिबिलिटीज़, डेप्रिवेशन, मेरिटोक्रेसी, सबके बारे में बातें हो रही थी। एंड दैट फॉर मी वाज लाइक, नहीं, मुझे इस काम में अपने बाकी ज़िंदगी निकालनी है। सो दैट्स व्हाई आई से दैट दिस इज, इट हैपेंड टू मी बाय एक्सीडेंट, लेकिन
very intentionally I am here. बहुत ही खूबसूरत एक्सीडेंट जो बोलते हैं जी. maybe it is this is also an accident actually. It is not just your chartered accountancy being an accident, but I Yeah. think even this you have slipped into it. Yes. Maybe it was fated for you. Everything. अभी इतने सालों बाद I have begun to believe that हाँ हम intentionally तो बहुत कुछ करते हैं, but everything that happens to us उसके एक purpose है, एक reason है. मेरे कोर्स ने मतलब आई हैवंट वर्कड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट जितना मुझे इसमें उसका फ़ायदा अभी हो रहा है, द वे आई थिंक ऑफ थिंग्स क्रिटिकली इन एन ऑर्गेनाइज फैशन, दैट हार्ड वायर ट्रेनिंग बहुत काम आती है. तो हाँ, आई एम नॉट वर्किंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आई एम अ परफॉर्मिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. That's a very nice way of putting it, a performing chartered accountant. Yes. Yeah, that's all about numbers. That's what you're looking at right Yes. now within Edelgive when you get in capital into grassroots level Ji. organizations. You also speak about something very different, Nagma, which is a very serious thing, and for me also it was something a bit not exactly new, but it's a very interesting concept, which is feminine intelligence, strategic patience, belief in people. This does not fall into the leadership framework. मतलब क़यादत निस्वान की बात करते हैं आप, feminine leadership. Yeah. Very interesting concept. What do you think about it? Can you just tell us a bit more on it? See, when I speak of it, ऐसे लगता है, of course मैं तो औरत हूँ, तो feminine leadership is something I should talk about. But if we really sit back and मेरे हिसाब से अगर आप हिस्ट्री में उन पावरफुल लीडर्स को देखो जिन्होंने दुनिया पे अपना मार्क छोड़ा हुआ है, and who have changed the lives of countries and people, feminine leadership was ingrained in the way they worked. Okay, what is feminine leadership? It is not simply about thinking like a woman. It is, I think, thinking like a human. Okay, Exactly. आप अपने जेंडर के आगे जाकर जब इंसानों के बारे में सोचते हो एक इक्वल फुटिंग पे, जब एक इंसान को उसकी हैसियत और उसके चेहरे और उसकी औकात से ज़्यादा समझ के उसके होल एक्सपीरियंस के साथ में आप उसको व्यू करते हो और फिर सोचते हो कि मेरे पूरे सिस्टम में उसकी जगह कहाँ है. That is feminine leadership. And आज के दौर में तो I think it is even more important to recognize that जो भी हम कर रहे हैं उसका आगे के सालों तक, डेकेड्स तक इसका इम्पैक्ट होने वाला है. हम बड़े लीडर हो या छोटे लीडर हो, हमारे आसपास के दायरे में उसका एक वजन है. तो टू लुक एट ह्यूमन बीइंग्स एज ह्यूमंस बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड रेस, कास्ट, बियॉन्ड द इनकम ब्रैकेट दे कम फ्रॉम, to understand what are we all doing here. All of us actually need the same things out of our lives. So what is this I, me, myself that we have to work on? So you think women are more geared towards this? Women, I think honestly, one is of course we have so much research on how women think and how men think और कितना फ़र्क है और empathy ज़्यादा है. But keeping all that research aside, अगर आप सिर्फ एक एवरेज औरत की ज़िंदगी और एक एवरेज मर्द की ज़िंदगी देखें, बाय द टाइम शी इज़ 15 शी हैज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड डीप पेन, डीप बायसेस, स्ट्रक्चरल बायसेस जो उसके साथ होती हैं, पीरियड्स हो जाते हैं, मंथली बेसिस पे उसको इंटेंस पेन फेस करना पड़ता है, रिजिलियंट भी होना पड़ता है. Okay, और बात भी नहीं करना होता है. तो if you see by the time she's even 15, she's already trained in negotiation, in pain management, in the things that men start learning once they get into adult life. Okay, so we are just better trained. We are really better trained. It has happened because of a natural process. It has become I think natural process भी, but a lot of societal process. Societal process. Intentionally आपको एक ओहदे पे रखा जाता है. आप मे बी आजकल बहुत घरों में ये ज़बान नहीं बोली जाती, but I like to say कि आपको अगर समझना है कि आपका घर कितना फेमिनिस्ट है या कितना इक्वल है, आप सिर्फ अपने डाइनिंग टेबल पे क्या हो रहा है वो देखो. रात में डाइनिंग टेबल पे खाना कौन लगा रहा है, खाना पहले कौन खा रहा है, बाद में कौन खा रहा है, खाना साथ में खा रहा है कि नहीं, बचा हुआ खाना कौन खा रहा है, प्लेटें कौन उठा रहा है, आपको सब समझ में आ जाएगा कि घर का हाल क्या है और आपका घर कितना इक्वल है, कितना फेमिनिस्ट है, कितने अंडे किसको जा रहे हैं, किसके अंडे किसको जा रहे हैं, पनीर के पीसेस किसके पास जा रहे हैं. आपके घर में लड़की IIT जा सकती है, लेकिन अगर घर में किचन टेबल पे ऑर्गेनाइज अलग हो रहा है तो आपको पता है कि उसका रियलिटी क्या है. बिल्कुल. एंड दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दैट इफ वी रियली वांट टू चेंज समथिंग, दुनिया शायद हम में से बहुत कम लोग बदल पाए, हमारे दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अपने घर का डाइनिंग टेबल तो बदलो. तो
आप एक बदलेगा 10 बदलेंगे, कम से कम एक कम्युनिटी तो बदलेगी, बट कम से कम अपने घर में तो बदलाव लाएं. So I feel leadership is inherently successful. Leadership is feminist. That's a very interesting way to put it, and it's also something that the lens, if you can look at it in a different way, it totally flips the model, and which is not there in frameworks of management and leadership styles में है ही नहीं. Yeah, they teach you aggression. 5 leadership styles की बात करते हैं, पर उसमें feminine leadership कहीं पर नहीं नहीं है. And leadership inherently जिस तरह से explain किया जाता है, it becomes more about competition. Okay. To be the best, the biggest, the fastest, largest number of followers, largest, so all the hyperboles, the extreme ways of talking about it. But leadership is also a lot about shifts. A lot of the wars we don't win. I think someone had said, I forget who said it, that some wars are fought simply because they need to be fought. And so all leadership doesn't see successful days, and we should be open to seeing leadership beyond the structured corporate frameworks. That's a very interesting way to put it, and also something very thought-provoking for everybody who's listening in. आपका जो involvement रहा है grassroots level organizations, NGOs के साथ, और enabling grassroots level leadership also, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक आपका काम रहा है. जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो रिसोर्सेज देते हैं छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने के लिए, एनजीओज का काम करने के लिए, उनकी सोच क्या है नवना? देखिए, I have met a fair number of people and I can safely say that लोग ओवरऑल काफ़ी अच्छे होते हैं. पीपल डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग थिंकिंग कि इसका नुकसान करना है या इससे पैसे नहीं देने हैं, या मैं इसका दैट इज़ टू फिल्मी एंड दैट इज़ नॉट रियल लाइफ. एट मोस्ट पीपल आर इल इन्फॉर्म्ड, disempowered, okay, also part of structures that are not very flexible, and some places may be more flexible, some people may be more disinformed. So it's not there is no 2-3 things that are absent in all large organizations or something. So intentionality that dena hai, earmarked funds bhi hote hain, sab hota hai. The second thing is that the way we structure decision making, and this is not just about the large foundations, I think if we are better informed, if we have a value chain, if we have decision making that is more involved in execution, like most people who decide on the grants haven't done a field visit in years. And the lived reality on the field, आप तो field में regularly होते हो. 5 साल पहले जो हो रहा था और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. Okay, what AI as an intervention has done, what lack of what laying off of so many people has done, what COVID has done. We are seeing the repercussions of all that. So landscapes have shifted, but decision makings are not informed out of that. They informed out of older frameworks. So that part has not changed, you're saying? Yes, it is. The part of giving. The part of giving is more academically and more theoretically informed. I feel we need to have experiential decision making. Every decision maker needs to have some KRAs of being in the field and understanding at least some part of the problem that we are choosing to fund. Because I'm a great doctor, I can't be a great mechanic, right? Bilkul, bilkul. So very hard hitting. I'm sure a lot of people will be squirming whenever they're hearing this. But I do understand the constraints on the giving world and also the taking world, the so-called NGOs, the taking world, which is there. No, so okay. Let me also be very fair to the giving world. The part that I spoke about is about the decision making. The constraints of the giving world beyond the decision making are also very hard. Compliance is a real thing. Managing that level of money, and the finally business makes that money, right? So business is the source of that capital. That means decisions not lying in one hand. So good people are also, and there are a lot of good people out there in that sector, but the structure doesn't enable everyone, and also everyone's missions are also different, right? I mean, there are, I really need to go after the vision that I am pursuing, and the ask of the smaller organization may be very different.
and that mismatch also happens, and we do not have organized information enough to have it Exactly. easy on that level. Yeah. Nagma, you also talk of trust-based philanthropy. So it sounds very progressive, but money always comes with conditions. Correct. We know that. Correct. How are you able to get money from investors, I would call them, on trusting organizations? See, actually, trust-based philanthropy is how philanthropy inherently works with humans, right? Abhi, when we are, suppose ek baar ko, let's stop thinking of CSR and philanthropy. When we pay for someone's tuition, we are not going and checking कि वो पढ़ रहा है कि नहीं. You know, some of us maybe see the progress reports. When we pay for someone's illness, हम जाके bill नहीं check करते. एक हम we trust the person who's receiving. We trust that they're doing the right thing, and we don't necessarily go to seek a healthy child kahan hai. And for decades, that is how Indian civil society was running on the back of very, very trust-based philanthropy, not philanthropy in templates. So one is, I actually believe trust-based philanthropy is actually the original philanthropy. It's the OG of how giving actually happened. What has happened right now is because the giving segment has changed. Like there was a time when it was individual family philanthropy, then it came to international NGOs, and now it's largely corporate and HNI and family philanthropy. The way they have been educated to look at information and the way they are geared to look at information is frameworked. Okay, so they of course will rely on frameworks and and KPIs to view anything that they invest in, and philanthropy happens to be that anything. And that's why people in the middle, like my role becomes important, because I am the translator. I'm nothing else. Good people would have given anyways. What is my job, or the job of someone in the middle, is to be able to translate कि हाँ इसका मतलब ये है, या जिस 500 बच्चे पढ़ रहे हैं is not an enough headline. Maybe ये सवाल से आपको जो जवाब मिलेगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है. ये बात कहना मेरी जिम्मेदारी है. Okay? और उनका मेरे साथ एंगेज करना या आपके साथ एंगेज करना उनकी जिम्मेदारी है. तो वी ऑल्सो हैव टू हैव दैट हैंडशेक. उसमें क्या होता है, जब ये सिस्टम नहीं होता, जब देयर इज नो ट्रांसलेटर, दैट्स व्हेन ट्रस्ट गेट्स फ्रैक्चर्ड, बिकॉज यू आर जस्ट लुकिंग एट KPIs एंड एक्सेल शीट्स एंड सेइंग ये अगर ये नंबर 10 से ऊपर गया तो अगला ट्रांच आएगा. And that's actually evidence based philanthropy. So एक तो ये है कि पैसा अगर किसी ने भी, whether it's to buy a chocolate or to alleviate poverty, अगर किसी ने पैसा दिया है तो वो ट्रस्ट से ही दिया है कि इसका काम होगा, नहीं तो कोई पैसे देता नहीं. giving for good and giving for greed, both giving only happens when you expect a return, and in philanthropy the return is goodwill, the return is societal benefit, and also so that there is inherent trust. What we have to do is ensure the structure enables good trust. So my effort is to ensure it is highlighted that trust costs. If we want to see trust in the form of Excel sheets, we have to pay someone to make those Excel sheets. True. We have to I buy heard you talking software. about that. We have to buy software. We have to hire reporters. And अगर आपको जितनी बढ़िया रिपोर्ट चाहिए उतना अच्छा रिपोर्टर आपको select करना पड़ेगा. So my job is to ensure that trust pays, like somebody pays for trust. And that doesn't mean emotion of trust, that means the process of trust. It has to be funded. जी. पर कितना मुश्किल होता है नगमा ये काम के लोगों को इस बात के कायल करें कि भाई ट्रस्ट पे आपको देना है पैसा. नहीं, बट एविडेंस तो मैं देती हूँ ना. आई मीन सी द फैक्ट इज आई एम, अगर मुझे, आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग, मैं गट फील पे बात नहीं कर रही हूँ. मैंने खुद या मेरी टीम ने विजिट्स किए हैं, मैंने खुद लोगों से मिला है. तो एक तो आई एम नॉट स्पीकिंग आउट ऑफ ओनली इमोशन, आई हैव सीन एविडेंस कि यहाँ काम हो रहा है. तो ये एक है. तो माई वोकैब्युलरी हैज टू बी नॉट फुल ऑफ इमोशन, give because it is good for society, which should be the inherent emotion. That is the fundamental of what we are giving. We cannot stop there. We have to also, yes, इतना जब money flow हो रहा है तो evidence अगर लोग मांगेंगे, our job is to point towards the right evidence. So I have to have that vocabulary. I have to have that evidence to point out. So nobody gives money because Nagma ने पूछा है. People give money because I am able to, or someone else is able to place the evidence that yes, it makes it work.
So in short, you're functioning as a translator between the NGO and philanthropic. Someone called me the honest broker. The honest broker. Yes, That's a good name. I can just tell you that I don't get paid for it. But yeah, it is. I don't see anything bad in that. Yeah. It becomes an honest broker. Yeah. But रिसेंटली आपका एडलगिव का ग्रो फंड आया था जिसमें कि 100 NGOs को आपने, इट वाज बेसिकली ट्रस्ट बेस्ड फिलैंथ्रोपी, 100 crore का फंड क्रिएट किया था जिसमें कि आपने 100 पार्टनर NGO सेलेक्ट किए फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, जिनको आपने द वे वी कॉल इट अनरेस्ट्रिक्टेड फंडिंग, कि भाई आपको जहाँ पर यूज़ करना है यूज़ करो, जहाँ पर आपको ज़रूरत है इसकी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका, और कितनी मुश्किल हुई या आसानी से आपको ये पैसा आया? नहीं, मुश्किल तो सी एक तो है ना, पैसा, वेदर इट आई एम अ स्टार्टअप, वेदर आई एम अ कॉर्पोरेट और वेदर आई एम अ philanthropist or anything, to make money move is a huge effort. So I think that in philanthropy or even in development, if we struggle because we have no profit margin to promise, however, raising money is every fundraiser's nightmare everywhere. So that's difficult no matter what. The difficulty actually was that it had not been done before. हम ये कह रहे थे कि we were requesting the funders to trust us, and we were requesting the 100 NGOs to help us be trustworthy. You were there on that call. पहले कॉल पे I had said that if अगर हम सब साथ में काम करेंगे तो this can be something that will be repeated later. Okay, if this fails then no one will give again in a cluster. And the 100 organizations I think are the reason. हमने क्या किया, हमने if you really look at it, what did we do? We put our neck on the line, that's it. But सारा काम, सारा proof, सारा evidence तो इन 100 organizations ने दिया. We were just collating all that information and showing it off that ऐसे होता है. तो the most beautiful thing was कि ये हुआ. Like even in the middle I used to think how is it being allowed to happen, but it was allowed to happen and people didn't just come, the funders were exceptional. उसमें कोई स्टोरीज याद है आपको नगमा, जो आपको लगा कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, ये कोई छोटा काम कोई NGO ने किया है या कोई बहुत बड़ा काम किया है जिसमें आपको लगा कि भाई सही काम किया है, एंड देन यू पैटेड योरसेल्फ ऑन द बैक कि भाई सारी टीम ने कहा कि फैंटास्टिक वर्क? नहीं, एक तो ये द फैक्ट दैट सारे के सारे, मतलब द रूल ऑफ दैट 100 वाज दैट वी विल सिलेक्ट 25% फ्रॉम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और 10% से ज़्यादा कोई सेक्टर का नहीं होगा. तो हमारे जो एप्लीकेशन स्टेज पे हमको 2355 एप्लीकेशंस ऐसे रजिस्ट्रेशंस आए थे, और जब हम वी वर गोइंग थ्रू इट वी वर सीइंग जस्ट so the application form was just 3 pages and the questions were very simple कि अब तक क्या हुआ और अगर ये हो जाए तो आप क्या करेंगे. The amount of grief in those applications, people just writing things like हमने 10 साल में ये प्रोग्राम बनाया था, वो बंद हो गया, हमें बहुत मुश्किल से ये CEO मिला था, वो छोड़ गया, हमारे स्टाफ को हम पैसे नहीं दे रहे, स्टाफ काम कर रहे हैं. एक इतना इमोशन था. we were derailed. We were delayed on applications. ऊपर से then in that out of 2,355 applications सिर्फ 3 कहते हैं कि हम climate पे काम कर रहे हैं. Because because depending on the geography their vocabulary is changing. See, India is such a vibrant, beautiful, distressed in different places country that everyone expresses it their way. And if you allow it to be expressed it their way, then you actually see emotions in those reports, and we saw that in the report. And then we said कि आप non-programmatic पे ही खर्चा कीजिए और आप जो भी खर्चा करते हो आप हमें बताइए. पहले क्वार्टर में 97% went on toilet repair and cushions and chairs, basic tech, Wi-Fi bills, these kind of things. उसके बाद में अगले क्वार्टर में and 97% पे honestly I thought I had to go back and talk to my funders and I also actually have made that let's be patient, we have promised कि हम intrude नहीं करेंगे. उसके बाद में the shift happened that every quarter there would be better expenditures, team hiring, better planning, reviews, all of that, and by the end it was CEO handovers, CEOs, strategic exercises, so you could see the shift. 52 of the 100 went and raised 150-60 crores all by themselves without us in the room. This is what you want, right? So I think that was for me, like, if we
if we really trust, so this is for me trust based philanthropy, where we are not saying कि आप हमको भूल जाओ, हम आपको भूल जा रहे हैं. आप evidence दो, but give the evidence of what is happening. Like one of the funders said, I want to know how many people are impacted. I said, ये math मेरे लिए बहुत आसान है, मैं सबका beneficiary number total करके तुमको बता देती हूँ. But why would you want to do that? Because this is a structure, you know, infrastructure grant है ये. तो उसको let's measure infrastructure. So we measured infrastructure. So we have to. So trust-based philanthropy cannot be कि आप philanthropist को बोल दो कि पैसा दो और भूल जाओ. Evidence has to be given. You can negotiate on what is evidence. Exactly. तो वो 100 करोड़ के ग्रो फंड के बाद फिर नगमा के एम्बिशंस बढ़े, बहुत बड़े. तो अभी आप क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही है. So it's under works. It has started. Grow Plus शुरू हुआ है. We are using the same Grow. एक तो ये मजा आ गया समझने में कि we can replicate Grow now in 15 days. मतलब तो कहीं पर भी किसी को भी अगर 100 NGOs के साथ में काम करना है तो वो प्रोसेस इज लाइक ब्यूटीफुल. मॉडल क्रिएट कर दिया है. सो एनी लार्ज फाउंडेशन जिनको बहुत सारे एनजीओ के साथ काम करना है बट उनको लगता है कि अरे हम गवर्न कैसे करेंगे, ये सब वो टेम्पलेट रेडी है, तो हम खुद ही कर रहे हैं, हमको पता है इट्स वर्थ इट, इट्स रियली इज. नाउ हाउ टू यूज दैट to look at India. So India is like the prime region of concern, right? जो experience दिल्ली में होता है वो बॉम्बे में नहीं होता, जो राजस्थान में होता है वो वेस्ट बंगाल में नहीं आता. तो हम एक्चुअली इंडिया को 6 लैंडस्केप्स की नज़र से देख रहे हैं. डेजर्ट्स, सेंट्रल पेनिनसुलर प्लेटो, नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस, हिमालयन रेंजेस, कोस्ट, आइलैंड्स. एंड एज सून एज वी हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया लाइक दैट, हमारे लिए एक नई दुनिया खुल गई है. बिकॉज यू नो डेजर्ट्स, the culture, everything from culture, the crime rates, the behavioral patterns, the food, everything starts becoming similar. You start seeing a pattern, and we are in early stages of that, and we hope to do a grow plus. Just make climate resilience comes from people. So how do we collect people in every landscape and do their best? So yes. So ये काम जो है connect करना capital, communities and change. Yeah. I see that line being drawn when you are talking. पर climate के जो conversations जो रहते हैं मौसम के, अगर मैं मौसम word use कर रहा हूँ थोड़ा सा, I'm basically dumbing it down a bit. But ये जो conversations रहते हैं ये थोड़े abstract रहते हैं. तो आप उसमें सच्चाई कहाँ से लेके आते हैं? सच्चाई क्या, पहले जब शुरू में मैं इन कमरों में जाती थी तो मैंने पहली बार तो मैंने 2017 में मेरी सहेली को बोल दिया कि मुझे क्लाइमेट नहीं आता, मैं करती नहीं हूँ. दिस वाज आफ्टर 6 years वर्किंग इन एग्री. ओके, बिकॉज आई सेड वो तो एग्रीकल्चर और क्लाइमेट थोड़े है, तो मैं इतनी डिस्टेंस थी. देन आई स्टार्टेड participating in a lot of climate discussions, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था. Because it's fairly scientific, it's very exclusive, and it's also very information heavy. So again, it was like being back in the time when I'm a CA and I'm looking at the development sector and saying ये क्या हो रहा है, you know, and saying कि सारा resource, सारा influence बैठा है बाहर और हमारी अंदर की दुनिया जो है वो ज़रूरत से मरी जा रही है. तो there has to be a channel of communication where without stupidifying things, we are able to simplify things and talk to those who need to unleash their money. That's why I believe that if we look at philanthropy and development, हम बोल सकते हैं कि लोग और देते नहीं हैं, but actually we are not even facilitating the process because most people are confused कि देना किसको है, you know, किसको देना है, क्यों देना है. उनके आसपास की दुनिया तो खूबसूरत है, तो उनको क्या पता कि कहाँ देना है. तो our communication also has to change. We have to simplify a lot of our distress instead of making it exclusive and very vocabulary heavy. So my job is to just again make it simple. But when you say it, जब आप बोलते हैं तो बहुत simple लगता है, पर I'm sure there is a lot of learning, there's a lot of knowledge acquisition that you do. There's a lot of stupid moments. There's a lot of long phases where I felt so stupid कि मेरे को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है. You know, questioning my entire education. And I am a difficult person to, you know, to destabilize like this. But a full year of exposure, going in different rooms, talking to different people, copious notes, and हर बार एक 10 words लिख रही हूँ, आ रही हूँ, पढ़ रही हूँ कि इसका मतलब क्या है. Now I feel equipped
फिर एक नई मीटिंग में जा रहे हैं और 10 नए वर्ड्स मिल गए. तो there comes a moment when you realize, okay, nahi, I have to give myself some breathing space, and I have to understand the system is also very geared to keep me out. Okay, so then it's my job to figure out to get in. Why do you say the system is geared to keep you out? मतलब सिस्टम वैसा बना है कि आपको बाहर रखना चाह रहा है? नहीं, देखिए कैसा है, अगर आप हर चीज़ का लैंग्वेज एक्सक्लूसिव बनाओगे, अगर मेरी बात सिर्फ आप ही को समझ में आ रही है और आगे के 2 लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो इट्स माई जॉब टू कम्युनिकेट और इट्स देयर जॉब टू अंडरस्टैंड. Okay, so if we really, whether it's in a space of climate or in any other space, अगर हमें चाहिए कि लोग पार्टिसिपेट करें, तो कम्युनिकेट करना ये हमारी जिम्मेदारी है. पार्टिसिपेट करना उनकी जिम्मेदारी हो सकती है, बट वी हैव टू यूज द राइट वर्ड्स, नो? तो जिम्मेदारी बढ़ती है. अभी मैं यहाँ बैठ के चाइनीज में बात करूंगी और बोलूंगी आपने मेरी बात का वजन नहीं समझा, तो कैसे चलेगा? मैं चाइनीज सीख के आऊंगी पहले. मतलब तो ऐसे लगता था मुझे कि लोग क्या बात कर. But Nagma, you've been in boardrooms, larger rooms where there are CEOs, there are probably governing bodies sitting over there. Decisions are being taken about grassroots level, मतलब ज़मीन पर जो काम हो रहा है, decisions are being taken over there. तो वहाँ पर पावर तो फील होता ही होगा आपको, पर काफ़ी सारे वाक़यात ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपका पावर ले लिया गया है. तो वैसे कोई वाक़यात, कोई कुछ याद है आपको, या क्या किया? What was your reaction to that? So ये तो बहुत होता है, ये तो अभी भी होता है. Okay, and तो पहले मुझे लगता था कि हाँ, because see when I started this, I was a 35-year-old CA who didn't want to be a CA. तो obviously पहले तो in any room that I would enter, it would be कि अच्छा ये टायर्ड मदर है, ये बर्नड आउट CA है, CA अकाउंट्स समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए ये कर रही है. तो उससे क्या है, आप जो भी बोलते हो उसकी अहमियत बिल्कुल निकल जाती है, बिकॉज यू आर टू स्टूपिड टू मेक सेंस. उसके बाद में वो जब समझ में आया कि थोड़ी सी अकल मुंह से निकल रही है, तो देन आई बिकेम टू प्रिटी टू बी देयर. तो बाल बनाती क्यों नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में थोड़ा हंसते कम है, तो somebody even told me कि थोड़ा कम हंसोगे ना तो लोग तुमको इंटेलिजेंट समझेंगे. That actually was told to me. Someone actually told me कि बाल बांधने से थोड़ा सीरियसली होता है. तो I have had those moments and that happened earlier. Okay, I'll come to the serious part of it. And it took me again some time to sit back and say, okay, मैं इतनी मेहनत करके अगर कहीं आ रही हूँ कुछ करने, तो मैं तुम्हारे लिए तो बाल नहीं बांधूंगी. Okay, that should be my so those things happened, and I'm glad it happened to me when I was 35 and not when I was 20. And I kept thinking कि अगर मैं 20 साल की लड़की होती, I would have been crushed. कि मेरी बात तो मैं भूल भी जाती, क्योंकि आप मेरे हंसी को देख रहे हो, आप ये objectification से I would have completely been derailed. But because by then I had already been there, done that, all that, I could laugh and say, not my problem. Now that actually is the way I have even managed in board meetings. सबसे पहले तो even in rooms of power, and power is in all rooms actually. Board rooms तो are loaded with a lot of decision making. Powers are in all rooms, but to go in and first say that everyone here is human, and everyone here knows something more than me, and I know something more than them. Okay, so let's calm down. This has been a cultivated, it's not always been the case. A game face तो मेरा पहले से ही था. Most of the time I have seen that लोगों का intention sabotage का नहीं होता. The thing is, what is the information that we are placing and what is the result we want. ये preparation हम ज़्यादा करते नहीं है. What I've seen my friends do, what I was doing in the beginning is, अच्छा मुझे लगता है ये grant बहुत ज़रूरी है, तो मैं अंदर जाके इतने शिद्दत से पिच करूँगी कि यहाँ ये बहुत ज़रूरी है, इससे इतने बच्चों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट उनको समझ ही नहीं आ रहा है. तो थोड़ा सा होमवर्क अबाउट, अच्छा उनके इंटेंशंस क्या है, व्हाट मेक्स देम feel that change happens. So I've started asking the second, first is what is real change, तो ये तो हमको पता होना ज़रूरी है. दूसरा is what will make you feel that change is happening. Okay, and I'm not lying, I'm just going to show you the movie that you want to see also, right? I mean, so while everything is working, this is happening, you also as a philanthropist, of course you would want to know what is changing, but what is change for you may not be change for me. So understanding that is my problem.
That is my problem to understand. That's my problem to solve. So I'm like that, and it's taken a lot of hard meetings to get to a point. But yeah, it never gets easy, yeah, Rubina. It's not easy. It's not easy. No, it never. It's not like after some time it'll get easier because you'll get used to it. You never get used to it. It's always. It sets you back. Personally, घर जाके सोच में पड़ते हैं या घर को लेके जाते हैं वो ख्याल कि भाई आज बोर्ड रूम में मेरे साथ जो भी हुआ। नहीं, मैं ये भी ना, इस पे बहुत काम किया मैंने। तो मैं इसको ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर देती हूँ कि यू मे हैव इंसल्टेड मी एंड आई मे हैव फेल्ट द इंसल्ट, एंड उसके बाद इट्स लाइक भाई मेरे लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं और ये मोमेंट मुझे याद रखना चाहिए, बट उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू मेरे लिए नहीं है। Okay, this meeting is not the only thing happening in my life for me, thankfully, or I have too many problems, so I have much to focus on, and this is not the only problem in my life. One, second is that I work on a principle that मेरे पास ना सिर्फ 2 चीज़ें हैं, मेरा टाइम और मेरा दिमाग। मेरा दिमाग का रियल एस्टेट बहुत ही महंगा है और उसमें कोई भी एक ज़रूरत से आगे नहीं रह सकता। तो सो आई विल पर्पसफुली शट द डोर एंड से अब बस, अब तुम्हारा टाइम ख़त्म, अब अगली मीटिंग में मिलेंगे, उसके लिए इतना प्रेपरेशन। So that's how I manage it. But that's really a learning for me also कि टाइम और दिमाग, ये 2 ही चीज़ें जिस पे आपका कोई तरह से थोड़ा तो हक है, और इन दोनों पे लोग कब्जा बहुत कर लेते हैं। यू नो, बहुत लोग अब तुम्हारे टाइम पे तफरी कर रहे हैं, बहुत लोग दिमाग में वेकेंट स्पेस भर गए हैं। यू आर फसिंग ओवर, इसने ऐसे क्यों देखा, उसने ऐसे क्या बोला, उसने मीटिंग में मेरा काम क्यों ले लिया। ये सब अभी ये ऑफ कोर्स हम ह्यूमन हैं और हमको इमोशंस है और हम फील करते हैं, बट फॉर मी इट्स लाइक ठीक है, अभी द मिनट आई गिव यू एनर्जी इन माई हेड, you become important to me. Okay, and most people are not important to us. They play a role, so to step back and say okay, अभी 2 घंटे हम रो लिए, अब बस इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं है, no permission. But it's really good for people to be listening to this in terms of how do you manage these kind of tensions within your workspace. Especially for women, I feel it is very important that we learn how to manage and deal with this. क्योंकि फेस तो करना ही है, ये तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है कि फेस तो करना ही है। ये शायद बहुत ही कम विमेन ख़वातीन ऐसी होंगी जिन्होंने ये सारे टेंशन्स नहीं फेस किए हैं, और मर्द भी फेस करते हैं। See, I actually also believe we do not realize how much men are facing the same thing. So CEO battles, boardroom insults, boardroom fights, these are also, so there is, as someone who works, we have to also keep 2 boxes in our head. One is the problem that everyone faces, and the problem of me because I am a woman. We will be surprised how light this box becomes, because a lot of problems are the problems of situation. Okay, एक cutthroat दुनिया में, the lion of the jungle survives is not a gender problem. But उसमें the rule book is different from you and for the men, that's the problem. So कब offense लेना है as a woman and कब offense लेना है as a worker is something we should be very clear about, because everything, if it becomes for us an identity issue, it's very painful. I know. How will you live? Yeah, and men live fine, na? And men are not having it easy. They have different problems. They have very different. What is that extra tool that men have to handle it? They shut down. They shut down. Yeah, they have boxes and they shut down. They are and also see what we are realizing is also harmful for them. They don't really talk about things, right? For them ये घंटा खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, भी चलो जाके क्रिकेट खेलते हैं या जाके XYZ करते हैं, they move on. Now what that does short term में is it gives you relief. You move on, you're able to negotiate things better. In the long term, it has been hard for men. How many men of 40, 50 are able to talk about themselves to their friend? They don't discuss. They have the long-term repercussions of what they face, and we have the long-term benefits of what we face. What are the long-term benefits? I would like to know that. Look at the way I have you. You have someone. We have women usually. We
come together in tribes. We find our own. And उसका दुनिया ने ना गंदा सा नाम दे दिया है gossiping. Oh please, you know, male gossiping is a real thing. Yeah, So I know that. it's not, and okay, अभी आप frustrated हो, vent कर रहे हो, ठीक है. So women share. Women make their experience a community issue. Your best friend knows how you're feeling. You're crying in somebody's arms. She's listening to your unreasonable thing and dealing with it. Men don't get this. And so by the time they are 50, they are so lonely. So male loneliness is a real thing. Lonely, and with the lifestyle related diseases, which are, I think, on the high anyway. Absolutely. But you have also started sharing your ideas on YouTube, through your blog, and through your latest journaling, I think you're doing on LinkedIn, which is called Enchanting. So why does Naghma write? Because she's angry. And why is Naghma angry? Because see, I mean, of course, I'm a walking anger. So everything that I do out of a reaction of anger. Like I feel that we are trained wrong, that we are told that love conquers all and all of that. No, our negative emotions are actually the gifts that God has given us. You know, envy, greed, anger. ये सब क्या है? They alert. They make you human. Also, and they tell you what is wrong. Okay, why am I feeling envious? Because someone else has what I don't have. You know, why am I feeling greed? Because I want something that someone... Now, controlling that becomes our mission. And why am I angry? Because I feel unjust about something. Now, if I'm angry, and if you're telling me, don't be angry, okay, that's a waste of it's like nuclear energy. You use your anger to channelize things, to make things beautiful. So for me, it has been a practice for very long that when I'm angry, I write. So I've got tons of things written here and there, and I write in the way I would read. So I have to make it like a really pretty version for the world. But yes, I mean... But what causes anger in you? Structural... Number one thing? Number one is when someone gets what they don't deserve. That makes me very, very, very angry. I find, because I feel that that experience has been there for a while, you know, stuck in bad places, undeserving truths. The fact that there is so much sitting in one part of the world and there's so less somewhere else. These things make me angry. On a personal level, and getting no food in time makes me very angry. I'm a very hungry person. But yeah, but whenever, so instead of, you know, yelling, shouting, throwing a tantrum, or just simply taking it out on someone, I write. And so now, itna kuch likh diya ki I thought, let's just make everyone else suffer with me. But they come across as very honest, you know, writing that whatever you're doing. Because I've been following that, and it's like, I think you also have, probably in the future, you could have another accidental career, which is of a writer. Oh, I don't know. Well, maybe I will have a hobby, but this world is, I mean, I know I'm going to die working here. And that's a very, very, I mean, I'm very sure about it. Yeah, it's good. I think the not-for-profit world needs people like you also. So don't even think of quitting and just stay over there. So, Naghma, आपका early childhood experiences, मेरे रिसर्च में और बातचीत से ये भी पता चला है कि आप तो यहीं हमारे पास के शहर के हैं, गुंटूर के हैं आप, आपके मतलब ननिहाल आपका वहाँ का है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, माई रूट्स आर इन गुंटूर. माई पेरेंट्स माइग्रेटेड, सो इसलिए मुझे कुछ लोग फेक तेलंगाना पर्सन बोलते हैं, बिकॉज आई हैव नेवर ग्रोन अप इन गुंटूर, बट माई वेकेशंस हैव बीन हियर. आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली इन बाइकला, जहाँ पर हम मतलब मेरे चाचा, मेरे फूफी सब साथ में रहते थे. तो आई हैव ग्रोन अप 19 years in a very, very closed, very people high environment. That is how, and I'm the eldest daughter of the eldest son. So a lot of responsibilities, or it has its own repercussions. No, it has. See, one is that I had in my parents, I had a very stellar role model. So, you know, I also joke with my dad that, you know, he has 4 children. He has Usul, Adarsh, and then Naghma and Asma. He's like that. Usul, Adarsh? Sounds like a Bollywood film dialogue. I know. So we grew up with that kind of role modeling, and that the good thing about it is that it makes you tough for the whole world, and also gives you hope in
the universe, you know, that Yeah. bad things happen, but good things will happen. But also the real life challenges of that is that you become the prototype for all children to follow. So that pressure of performance is there. But I think overall, when I look back, you know, I wouldn't change a thing. You know, I was a young CA. I got married young. I have a banker husband. I have 2 sons who are both grown up, and therefore I am everywhere. So it's a गुंटूर की मिर्ची मशहूर है, तो वो मिर्ची का कुछ इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा. I am the मैं बहुत ज़्यादा मिर्च खाती हूँ. मिर्च खाते भी हैं, and I फिर love गर्मी. हाँ. I love this state. I love the Hyderabad Guntur energy very deeply. Yeah. But on a more serious note, Nagma, you also talk about feminism a lot, and you have put down that you're also a feminist. What does it mean for you? For me, all right, let me start from the start. A lot of impression of feminism has become that anti-man and, you know, women rights. And मैंने काफ़ी ताने भी सुने इस बात पे कि हाँ आ गए feminism वाले, and what is that? You know, again, I feel the world was inherently designed to be feminist. I feel the way, the beauty of the man and the woman, and the hunter and the nurturer, and the nurturing weak कब से हो गई? You know, who told us nurturing? Or nurturing is much more powerful than hunting. To me. Truly. And it is a beautiful. I mean, एक ज़माना था when I used to feel if I wish I was a man, and today I feel no, that I'm so glad I'm a woman, because you experience life to your fullest. So to come back to the question, one is I think the world was designed. I think God designed it as a feminist world, where you look at human beings as humans instead of man, woman, and third, and, you know, other genders and all. They are humans. They have their preferences, and to me it is that let me live the way I want, and I have to return the favor to you. And that basic respect to me is feminism. Being able to choose what I want to do, how I want to identify myself, what work I want to do is feminism. And a lot of good men are feminists. Yeah. And I am too. And also, it doesn't fall into that general definition these days of going around of feminism. What you're saying is basically humanism. It is. तो एक तो मुझे पता नहीं ये नाम किसने रखा. Okay, some dushman of feminism has called it feminism, because it is simply we keep arguing about what it means instead of what it stands for. Yeah. Okay, अच्छा ठीक है, आप निकाल लो ये vocabulary अपनी डिक्शनरी में से, बट आर यू एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्टफुल एंड थिंक दैट समवन स्टैंडिंग ऑपोजिट टू यू होल्ड्स द सेम रिस्पेक्ट एंड पावर एज यू डू? इफ यू डू दैट, देन यू आर अ फेमिनिस्ट. एंड I feel that is important. I feel that very passionately. I have 2 sons, and I used to feel very, very responsible. Like काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी बेटियां हैं, और obviously it's difficult to raise children in this environment, and especially daughters. But I used to feel so much more responsible about raising sons, because I would feel my son is going out into the world where, you know, he could be the protector or the perpetrator, you know, depending on what he chooses. And to give him values, to be able to become the hunter who also nurtures his environment is my responsibility. I think that is feminism, and women have to embrace it more than otherwise. Also, what feminism actually means from one person to another, and what is the spirit of feminism is something that needs to be taken up by us. Exactly. I think मेरे लिए 2 levers है, respect and choice. Yeah. You give respect, you demand it. You give choice and you demand it. So, it's so simple. It's very simple. It's so simple. इतना argument किस बात के? हाँ. Because we start arguing on whether you know, a homemaker is more important than a career person. No, what is even women who I believe all women should work for money, and that's not because that equates them to the man's stature. It's because financial independence is everything in a world where, you know, our world is shifting all the time. So every woman should have financial independence, however much she chooses, even if she has wealth and she takes interest out of it. But a woman having resources in their hand is what we have to talk about, not whether a working woman is better than a homemaker. It demeans the entire discussion into what we can do as tools
घर में खाना पकाएं कि ऑफिस जाएं, ये कितना सा टुच्चा सा आर्ग्यूमेंट है, ये क्या बात है। बड़े प्रॉब्लम्स लेके आओ, मतलब मर्द और औरत एक घर साथ में चला रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप। तो नगमा का सफ़र बहुत ही लंबा रहा है। लंबा तो नहीं, पर वो एक छोटी सी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं। आगे क्या प्लान्स हैं नगमा? ये एक तो यही करते रहना है, बट एक्चुअली आई एम श्योर देयर इज मोर कमिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट या देयर सम सस्पेंस इन लाइफ इज गुड। बट इतना है कि हाँ, काम तो करते रहना है, and somewhere this sector will have to manage me. लोगों को आपका गुस्सा देखना है, सुनना है या पढ़ना है उसको? देखिए, ये दुनिया में inequality and the need for resource is not going away anywhere. So I am employed happily for till I can do my job well. But yes, it is. I wish our tribe increases. Like I said, I've got people like you. I want more and more people to be able to use our individual influence. We don't have to be as influential as a big name or a leader. Yeah. We all hold influence. Influence your dining table, your community. That's so. I will be there. And we're lucky that you're going to be around, Nagma. But I think the conversation was brilliant, exceptional, so many insights for me also, and a lot of moments where I literally got goosebumps. But honestly, Nagma, you're somebody who can actually learn a lot from, and also, aspire to at least not exactly reach that, but yes, if Nagma can do it, so can we, kind of a story. That's what we hope to get through this series that we are doing. Thank you. After this brilliant, engaging conversation with Nagma, I think I need to take a break over here, but I think it's been exceptional that we had this chance to talk to a person like her. ये जो कहानी चेंज की जो एक अलग कहानी लाती हैं, कैपिटल इनटू एनजीओज की एक अलग कहानी है, और कम्युनिटी को जोड़ के ये तीनों को एक तागे में पिरो के जो आपने काम किया है, ब्रिलियंट, हैट्स ऑफ टू यू। टिल देन, टू ऑल माय लिसनर्स, टू ऑल द पीपल हु आर ट्यूनिंग इन, सवाल पूछते रहिए, सेहत का ख्याल रखिए और सुनते रहिए विमेन वी आर।